Hello students, let us start with the next lesson, industrial management. So in the last class we have discussed about the motivation, types of organization and leadership, what are their qualities and how to be motivated to get the work done. Now as per the Maslow's theory of motivation, there is a hierarchy of needs. Okay, so in what level it is to be motivated. Okay, so there is a pyramid: self motivation, esteem needs, social needs, safety needs, psychological needs. So accordingly, what I told you, want to be motivated. Okay, so with respect to the situation, so it is to be motivated. Okay, so there is a pyramided self motivation. सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट. पर्सनल ग्रोथ का मतलब मेरे को ऐसा होना चाहिए, सो दैट इज इंटरनली आना चाहिए. हम लोग बोलते रहता है, मैं बोलने से स्टडी मत करो, आपके लिए स्टडी करो. सो यू वांट टू बिकम एन गुड इंजीनियर, यू वांट टू हैव अ गुड फ्यूचर, सो यू शुड हैव अ गोल. दैट इज व्हाट द पर्सनल मोटिवेशन इट इज. पर्सनल ग्रोथ के लिए आप लोगों का मन में आए तो this is the personal motivation, this is the self motivation. मेरे को ऐसा ही करना चाहिए, आप लोग ऐसा मन में आए तो, so that is what it is a self motivation. Then esteem needs: achievement, status, responsibility, reputation. मेरे को ये अचीव करना चाहिए, मेरे को ये एक स्टेटस चाहिए, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं करना चाहिए. दैट इज व्हाट द एस्टीम नीड्स. ए रेपुटेशन: मेरे को ये, मेरा ये फैमिली ऐसा है, ये रेपुटेशन मेंटेन करना है. एक एक बार मेरे को वो करना नहीं चाहिए, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दैट, सो आई हैव टू वर्क देयर. सोशल नीड्स: सोशियबिलिटी, बिलोंगिंगनेस, रिकग्निशन. मेरे को ये सोसाइटी में रिकग्नाइजेशन होना चाहिए, मेरा बिलोंगिंग, मेरे को ये, this is related to me, so I have to do work. Safety needs: job security, protection, insurance against a risk, etc. सेफ्टी के लिए एक एक बार वो मोटिवेट करके वो काम करना चाहिए. देन साइकोलॉजिकल नीड्स: फूड, क्लोथिंग, वाटर, एयर, शेल्टर, एक्सेट्रा. मेरे को आज जीने के लिए मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए, क्लोथिंग, देन पानी चाहिए, एयर चाहिए, शेल्टर, मेरे को घर वगैरह चाहिए. उसके लिए भी मेरे को, सो आई हैव टू वर्क, सो दैट इज व्हाट द साइकोलॉजिकल नीड. मोटिवेशन इस तरह का वो पिरामिड होता है. सेल्फ मोटिवेशन इज द टॉप लेवल इट इज. सो आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई वांट टू बिकम एन गुड इंजीनियर, आई वांट टू बिकम एन साइंटिस्ट. In that way, if you think, so automatically the esteem needs, social needs, safety needs, psychology needs, so everything will be covered as per my knowledge. This is what I feel. So first, whatever you want to achieve, you should have a self motivation. It is. So this is the Maslow's theory of a motivation. So next topic is a communication. So usually communication मतलब बात करने का. So सिर्फ एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है, इसका कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. रिसीवर से जो सेंडर रहता है वो रिसीवर रहता है. मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग ले रहे हैं. मैं क्या दे रहा हूँ, आप क्या ले रहे हैं, उसको समझ में आना चाहिए. ऐसा बोलना नहीं चाहिए आप लोग क्या, मैं हाथ मुट्ठी बंद करके मैं देता हूँ, ये आप क्या दे रहे हैं, क्या दे रहा है. सो इसका मतलब है, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड. आई एम सेंडर, यू आर द रिसीवर. दिस इज वॉट द कम्युनिकेशन.
This is actually the exchange of facts, ideas, opinions or emotion by two or more persons. कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ हम लोग बोलने से और आप लोग सुनने से, ऐसा नहीं है. सो एक एक बार इशारा करके आप लोग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. इवन इफ यू आर सेंडिंग द मैसेज दैट नेक्स्ट पर्सन विल अंडरस्टैंड, दैट इज अ कम्युनिकेशन, राइट. यू आर सेंडिंग द मेल, देन वन पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग. यू आर आमने सामने बात कर रहे हैं, दैट इज अ कम्युनिकेशन. Okay, so this exchange of facts, ideas, one can understand who is sending and who is receiving, दोनों कंफर्ट होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट द कम्युनिकेशन. इसीलिए आप लोगों को इन फ्यूचर, सो यू वांट टू डेवलप द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो बोलता है वो कभी मरता नहीं है करके आप लोग सुना होगा. बोलने का ऐसा मतलब नहीं है, ओनली इट इज नॉट फ्रॉम द साउंड. Okay, so it is from the paper. If you send a letter by post, that is also one type of communication. It can also be defined as the process of meaningful interaction among the individuals. Okay, that what I told you. Interaction जो भी होता है वो meaningful होना चाहिए. मैं जो भी समझा रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए, that is a meaning. मैं जो भी लेटर लिख रहा हूँ, whatever I am the sending letter, whatever I am sending the mail through WhatsApp, through मैसेज, आजकल तो बहुत सारा कम्युनिकेशन मीडिया बहुत स्ट्रांग है. इवन आप लोग टीवी देखते, सो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज दे आर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक. सो दिस इज व्हाट द कम्युनिकेशन इट इज. The special features of the communication. Communication is of a two-way traffic. Communication is unavoidable. You cannot avoid it. Communication के बिना सो हम लोग जी नहीं सकते. Communication is a social process. Communication is a continuous process. Communication is a universal. So these are the main features of the communication. Communication process. Next topic, the communication process is the guide towards realizing effective communications. The communication process helps in sharing of a common meaning between sender and a receiver, and individuals that follow the communication process will have the opportunity to become more productive in every aspect of their profession. ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस एक गाइड करता है टुवर्ड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इसका मतलब क्या है, रिसीवर एक रहता है, एक सेंडर रहता है. सेंडर ही विल सेंड समथिंग, देन रिसीवर ही विल रिसीव समथिंग. लेकिन द कॉमन मीनिंग होना चाहिए. मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ आपको समझना चाहिए, होता समझ में आना चाहिए. दैट इज व्हाट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो एक एक बार अभी हम लोग सिर्फ भाषण देते रहता है, सो सामने वाले को बोर होते रहता है. सो दैट इज नॉट द इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग. अभी आजकल कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हेन यू गो टू द इंडस्ट्री, बिकॉज देर आर अ कस्टमर, यू आर द बिजनेसमैन, यू सो यू वांट टू सेल समथिंग, सो you should have a proper communication, you should have a effective communication, then only the receiver will understand. Next, elements of a communication. Okay, so there is a sending, then this is what the sending and this is what the feedback look it is. See, transmission, then after that decoding, then receiver, then encoding, then transmission, then decoding, then sender message, then sender message, encoding. Okay, so this is what the circle it is, and there is a everywhere, so you can find the noise here. अभी इधर सेंडर है, इधर रिसीवर है. सेंडर ये करने के बाद एनकोडिंग होता है, ये एनकोडिंग ट्रांसमिट होके बाद डिकोडिंग होके रिसीवर को मिलता है. देन ये जो है ना सेंडिंग लाइन है, ये फीडबैक है. सी
अभी भाई आजकल ऑनलाइन क्लास हम लोग वीडियो वगैरह कर रहे हैं, आप लोग यूट्यूब में देखते हैं सब कुछ, वी आर सेंडिंग इट एंड यू पीपल आर द रिसीवर, बट द फीडबैक लुक ये नहीं रहता है। अगर आप लोग ऑफलाइन हम लोग क्लास लेते रहते हैं, देन आई स्टार्ट टीचिंग, okay, so immediately I may get a feedback over here. So that is what the effective communication is. I hope you understanding offline and online. Okay, हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जस्ट वी आर प्रिपेयरिंग द वीडियोज, वी आर सेंडिंग इट, बट you cannot see you people and what you are understanding even we don't know, because you people are not sending any feedback even whether you are understanding the lecturer or not. So this is not a effective communication what I feel. If it is offline, even if you are in the classroom, because I am teaching directly, physically I am teaching, even if you don't understand directly you can question, okay, even I feel, I can watch your faces whether I am teaching it properly or not. So this is what the effective teaching it is, but actually the element of communication, one part is a sending and one part is a feedback look it is. Okay, so there is sending message, encoding का encode होता है, वो encoded transmit होता है, वो decoding होके receiver को मिलता है, मतलब करेक्ट वो जो उसको क्या चाहिए वो हिसाब से देन ही विल रिसीव द मैसेज. लेकिन व्हेन ही रिसीव द मैसेज, रिसीवर इमीडिएटली द सेंडर हैज़ टू अंडरस्टैंड, रिसीवर को मैं जो भी भेजा है, वट एवर आई एम सेंडिंग, ही रिसीव्ड इट प्रॉपरली एंड ही अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. उसको कैसा चाहिए वैसा मैं इंफॉर्मेशन दिया है. सो दिस इज द हाउ इट इज़ अ लाइन अप, ऐसा ही उसको फीडबैक होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द एलिमेंट्स ऑफ, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड विद दिस स्ट्रक्चर, सो दिस इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मतलब मैं जो भी देता हूँ उसको फीडबैक मेरे को आना चाहिए, वेदर ही अंडरस्टूड और नॉट. Okay, if he understood, so then there is a effective code. If it is not, so that communication is not effective it is. The sender, so in detail, the communication process begins with the sender who is wishing to send a message to the receiver. Then message is an information. Message may be an idea or thought the sender wants to convey to the receiver. एनकोडिंग का मतलब क्या है? एनकोडिंग इज अ पुटिंग अ मैसेज इनटू वर्ड्स और इमेजेस दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय बोथ सेंडर एंड द रिसीवर. अभी एक एक हम लोग बोलते रहते हैं, उसको बोलने को नहीं आता है. ओके, एक एक बार वो डफ रहता है, हम लोग इशारा करते हैं उसको ऐसा ऐसा है करके. ओके, सो विद द हैंड एंड विद द फेस एक्सप्रेशन, सो वी ट्राई टू convey the message. So इसका वजह से मैसेज इन द वर्ड्स और इमेजेस दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर. वो देखते हैं हम लोग बोलने से वो सुनता नहीं है, लेकिन उसको कन्वे कैसा करने वाला है, एक इमेज देख के और एक सिग्नल दे के समझाता है. दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. दिस इज व्हाट द एनकोडिंग. ट्रांसमिशन चैनल, द चैनल इज द मीडिया थ्रू विच द मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अभी ईमेल, a WhatsApp and simple message, then phone call. So these are the transmission media, how you are sending the message. Receiver, the receiver is a person or group to be transmitted. एक आदमी को बोल सकता है मैं क्लास में बोल रहा हूँ, अभी मैं वीडियो भेज रहा हूँ, इट इज़ अ ग्रुप, सो एवरीबडी कैन, सो फॉर मैक्सिमम पीपल आई एम सेंडिंग द इंफॉर्मेशन. Decoding is the process by which the receiver interprets the message and translate into the meaningful information. अभी मैं मैसेज दे रहा हूँ, डिकोडिंग हो रहा है, मैसेज देख के what he understand, so that is what the decoding. ओके, आप लोग एक एक बार क्लास में बोलते रहते हैं और टीचर सो मुंह का ऊपर ऐसा सिग्नल देता है, डोंट टॉक,
he will not say don't talk, but he will send the one message, right? अभी आप लोग समझता है वो टीचर बोल रहा है बी साइलेंट करके he is not using the word, but he is sending the one symbol. That symbol he can understand. So वो जो ट्रांसमिशन हो रहा है आप लोग को उसको अंडरस्टैंड किया, कैसा अंडरस्टैंड किया, वो डिकोडिंग हो गया आपका मन में उधर. सो दिस इज व्हाट द डिकोडिंग, बिकॉज द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यू गेट इट बाय दैट इमेज. Noise may be disturbance that obscures, reduces or confuses the clarity or quality of the message being transmitted. ओके आप लोग टीवी देखते रहते हैं, फ़ोन पे बात करते रहते हैं. सो अभी बोलते हैं आपका जो भी मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, बिकॉज देर इज अ नॉइस. There is a noise. Even I am teaching something, some back student, they are disturbing, even front student, they may not understand because there is a noise. Feedback is what? Feedback is the reaction. Without it, the sender of the message cannot know whether the recipient has received the entire message or not. That already I told you. अभी फ़ोन पे बात कर रहे थे सर, अभी हम लोग बोलते हैं जो क्या बोल रहा है मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो मैसेज है. दैट इज व्हाट द फीडबैक. ओके, विदाउट फीडबैक, okay, so that is not the effective communication, because whatever I am telling, whether I am if I am transmitting the some information, the receiver he may not understand, so that is not the effective communication. To want to be effective communication, there should be some feedback system for that. So then there is a channel of communication. The communication channels are the means of transmitting the message from sender to receiver. The some important communication channels are, already I told that: use of mobile, use of formal printed invitation, use of telephone, use of a mail news, use of television, use of questionnaires, use of newsletter, use of newspaper column, use of personal letter, use of face to face contact by salesman, use of a postcards. ये जो भी listed है communication का channel है, so already you people are experienced. You don't think that communication is only it is to face or mouth to mouth. जो आप लोग भी लेटर लिखते हैं या मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मेल करते हैं या पोस्ट कार्ड से भेजते हैं, और एडवर्टाइज के लिए हम लोग जो भी कंपनी का एडवर्टाइज आते रहता है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट कंपनी टू द कस्टमर देयर. मैं बोल रहा हूँ मेरा कंपनी ऐसा है, हम लोग भी कॉलेज का एडवर्टाइज करते रहते हैं, हमारा कॉलेज में इतना इतना फैसिलिटी है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वी आर कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट व्हाट वी आर. इवन द बिजनेसमैन, दिस इज व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग, दिस इज माई कार, दीज आर द फ्यूचर्स. हर एक आदमी को बोलने को नहीं होता है, बिकॉज ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस वन अ पोस्टर, विथ थ्रू दैट ही इज कम्युनिकेटिंग विद द पीपल. So these are the different channels of communications. Then the important of a communication. Why? What is the important of it? Sorry. It improves the employer and employees relationship. Communications बात बोलते हैं हम लोग, स्वीट बोल के चीटिंग भी नहीं करना चाहिए. You be ethical in that communication. वो improve employer and employees relationship. It motivates the employees. कम्युनिकेशन से मोटिवेट भी कर सकते. मैं कुछ भी अच्छा करते रहता हूँ, लेकिन उसको कम्युनिकेशन नहीं होता है तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट. इट इंक्रीजेस द एम्प्लॉय मॉरल, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, इट सेटिस्फाइज द स्टेक होल्डर्स, इट इंक्रीज द सेल्स. It helps in effective planning, organizing, staffing and leading and controlling. Okay, इतना सारा इसका कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट है. कम्युनिकेशन क्लियर है, इफेक्टिव है, मीनिंगफुल है, सो यू कैन अचीव एनीथिंग ओवर देयर. एक बार इतना अच्छा आदमी बोलते रहता है, सामने वाले को उल्लू बनाते हैं. इतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लेकिन सम एक्सटेंट
ऐसा नहीं होना चाहिए मैं स्वीट स्वीट बोल के उसको चीट कर सकता हूँ, बट सम एक्सटेंट यू कैन डू इट. कम्युनिकेशन किसका मतलब, सो मैक्सिमम पीपल दे आर थिंकिंग भाई स्वीट स्वीट मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, भाई किसी को भी उल्लू बना सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ. दैट इज़ नॉट द केस. कम्युनिकेशन चैनल इतना सारा है, सो उसको ठीक से संभालो. सो 100% सो यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ. Then barriers to communication, though the communication appears to be a simple, it is not so in reality due to complexity of a people involved and the surroundings. Hence, the communication cannot be complete and perfect. There are some barriers which make communication incomplete, unforceful, ineffective, and imperfect. Barriers to communication, physical barriers. Separate working areas of people of a different status. Perpetual barriers. It depends on how our thoughts, assumptions, and perceptions shape our own realities about a person, people, things, job, etc. Emotional barriers. The communication should be free and open, and it should not be influenced by emotions like fear, mistrust, and suspicions. Cultural barriers. The people have to work with a different culture having different behavior to remain in it, and the sooner or later you need to adopt the behavioral patterns of the group. Language barriers. To improve our personality, we need to learn the different language, so has to work with the different people in the universal market. Gender barriers. We have to work on a common platform, and both men and women are treated equal in the present market scenario. Interpersonal barriers. These are due to less contact with the people, rituals, working activities, honesty, etc., lead to maintain the distance themselves from the others. So barriers to communication, मैं अभी आपको बता रहा था. फिजिकल बैरियर्स, वर्किंग एरियाज ऑफ पीपल ऑफ अ डिफरेंट स्टेटस. मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं सीनियर इंजीनियर हूँ, ये छोटा है. फिजिकली हम लोग, बैरियर्स का मतलब क्या है, हम लोग एक एक बार डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं उधर, एक एक बार वो कम्युनिकेशन फेल हो सकता है. परसेप्चुअल थॉट्स का वजह से भी, ए मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरा ही करेक्ट है, वो रॉन्ग है, बट ऐसा नहीं रहता है उधर. परपेचुअल बैरियर्स. सो तभी क्या होता है, मैं वॉट एवर आई एम डूइंग इट इज़ अ ग्रेट, माई जॉब इज सुपीरियर. ऐसा नहीं होना चाहिए. इम्पार्शियली काम करना चाहिए उधर. बड़ा छोटा ऐसा नहीं रहता उधर, इसका वजह से भी कम्युनिकेशन फेल हो सकता है. इमोशनल, डर से काम करने का. मिस्ट्रस्ट, उसका ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है. सस्पेशन, उसका ऊपर सस्पेक्ट करके काम करने का रहता है. सो कम्युनिकेशन इन द, अभी जो भी है वो डिस्कस कर. कल्चरल बैरियर्स, डिफरेंट कल्चर रहता है. अभी हम लोग ही देख रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला. सो कल्चर अलग अलग रहता है. सो उसका वजह से एक एक बार डिस्मिस हो सकता है. सो इसका वजह से वो जो हम लोग जो भी रहता है, सो यू हैव टू बी एडजस्ट विद दैट, एंड यू हैव टू understand what are their culture and how to you have to behave and how to get a work done there. Language, ये भी हो सकता है. इसका वजह से मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलते रहता हूँ, डोंट हेट एनी लैंग्वेज. मेरा मराठी है, मेरा कन्नड़ है, मेरा उर्दू है. सो ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए, बिकॉज इफ यू लर्न एनी लैंग्वेज सो यू कैन सर्वाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो दैट्स वाई दैट इज़ द लैंग्वेज बैरियर्स. इसका वजह से भी कम्युनिकेशन का अफेक्ट हो सकता है. सो दैट बैरियर, सो यू कैन
अवॉइड इट. जेंडर, मैन, मैं, आई एम द मैन, आई एम द पर्सन, वो मैन, ही इज अ वुमन, वो डिफ्रेंशिएट आना चाहिए. सो यू हैव टू थिंक वी आर ऑल इक्वल एंड यू हैव टू वर्क टुगेदर. सो दैट इज, इसका वजह से भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ सकता है उधर. इंटरपर्सनल लेस कांटेक्ट विद द पीपल, इसीलिए यू विजिट, where you go and you meet the people. Okay, so you go different places, you understand their culture, you understand their language, so automatically the communication will be improved there. Tips for effective communication. कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए थोड़ा सा टिप्स है. सो अंडरस्टैंड इट, नो योर सेल्फ. A good communicator knows what she is talking about or writing about. आपका बारे में पहले समझ के ले लो, आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप लोग क्या एक्सप्रेशन कर रहे हैं. सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन विच वे यू आर गोइंग, वेदर इट इज अ रॉन्ग और राइट. सो इन दैट वे यू थिंक इट. सो इसका मतलब क्या है, हम लोग what we are, so you have to understand it first. Be focused, should be clear and to the point. आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या दे रहा है, you don't get confused in that, and to the point, so you give the information. Brevity is the soul of it. Say what you want to say in short, straight and a simple sentence. सो एक बार इतना सा छोटा सा मैसेज देना रहता है, हम लोग उसका बारे में आधा घंटा उसको सामने का आदमी को कंफ्यूज किया तो सो व्हाट यू ओनली थिंक व्हाट हैपन्स. सो इसका वजह से कैसा होना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए, से व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू से इन अ शॉर्ट, स्ट्रेट एंड अ सिंपल सेंटेंस. सिंपल में बोलना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द ब्रेविटी इज द soul of it. Know your audience. Accordingly, you have to change your style and adopt the content. अबे हम लोग आप लोग भी किधर भी हमारा ही क्लास में बोर हो सकता है, ये सर क्या बोल रहा है. हाँ, 1 घंटे का क्लास में 2 घंटे बोल रहा हूँ, ऑडियंस को मेरे को भी देखना चाहिए. सो वट एवर आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन, whether is able to understand, whether is receiving my information or what, that is to be understand that first. Know your audience. Audience कैसा है. हाँ, ऑडियंस एक बार कैसा रहता है, सर आप 2 घंटा सिखाओ, हम लोग बैठते हैं, सर आधा घंटे में सर मेरे को, हम लोग बस बाइक में होता है. सो दैट्स वाई, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, व्हाट द इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग देम, व्हाट इज देयर कैपेसिटी, what are their abilities, accordingly, so you have to give the information. Be positive, believe in yourself. अभी आप लोग जो भी बोल रहे हैं, अननेसेसरी कितना भी इमेजिन करके बोलने का, जो भी क्वेश्चन डाले, व्हेन दे विल पुट द क्वेश्चन, सो आप लोगों को गड़बड़ नहीं होना चाहिए. बिकॉज वट एवर यू आर गिविंग द इंफॉर्मेशन, you be positive whether you are giving the correct information or what. First you believe yourself. Bridge the gap between yourself and your audience. So आप लोग एक बार बहुत सारा सेमिनार अटेंड करते हैं, स्पीचेस रहता है तभी अटेंड करते हैं. एक बार स्पीचेस आप लोग को बोर होता है, एक बार 2 घंटा भी आराम बैठ सकते हैं, क्योंकि वो जो सेंडर रहता है ना, ही इज गोइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिमसेल्फ एंड द ऑडियंस. ऑडियंस कैसा है, मेरे को कैसा इंफॉर्मेशन देना चाहिए. नेक्स्ट, कीप इन माइंड 7 C's: कैंडिड, क्लियर, कंप्लीट, कंसाइज एंड कॉन्क्रीट, करेक्ट एंड कोर्टियस. सो दीज आर द डिफरेंट C's आर देयर. अगर ये जो भी 7C है उसको हम लोग दिमाग में रख के कम्युनिकेट किए तो सो विल नॉट फेल एनीवेयर. ओके, सो विद दिस आई विल
end the lesson. Then we'll in the next class, so we'll discuss important of a questions. Important of a questions, that means what? अभी आप लोग क्वेश्चन डालते, then what you get the reply. By putting the question, sometimes you may understand not a paltu question. It is to be related to that what you want to get the answer, what you want to get the solution, accordingly how to put the questionnaires. Okay, so thank you, Anand.